नमस्कार, वनक्कम। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थिरुशिवा वी मैयानाथन जी, भारत सरकार के मंत्रालय के सचिव श्रीमती लीना नंदन जी, तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुप्रिया साहू जी, श्री नरेश पाल गंगवार जी और सहित उपस्थित सभी यहाँ आए हुए वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं संवेदीकरण सह समीक्षा कार्यशाला इस सेंसिटाइजेशन कम रिव्यू वर्कशॉप में भाग ले रहे हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, मीडिया के हमारे सभी भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश में त्वरित रूप से जो आर्थिक विकास से हमें कई लाभ हुए हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। उद्योग से, अन्य प्रकार के ऐसे कार्यों से हम विकसित हुए हैं, लेकिन हमने कई रूपों में पर्यावरण को भी काफी प्रभावित किया है। एनवायरनमेंट जो है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इन उद्योग धंधों के कारण, जो अत्याधुनिक तकनीकी प्रयोग नहीं होने के कारण शहरों को प्रदूषित किया है। गत 2 दशकों से वायु प्रदूषण एक यूनिवर्सल वैश्विक जन स्वास्थ्य की समस्या बन गई है और इसमें से प्रमुख पर्यावरणीय स्वास्थ्य जो खतरे के रूप में पहचाना गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सभी के लिए स्वच्छ वायु, यह जो सपना है उसको पूरा करने की दिशा में हम सभी प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और इस सपने को साकार करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ पवन, नील गगन, स्वच्छ पवन, नील गगन, यह जो हमारा सपना है, इस सपना को हम साकार करने के लिए जहां राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के माध्यम से एनसीएपी और 15वें वित्त आयोग का 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए जो मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड है, उसके तहत दक्षिणी क्षेत्रों में यह जो साउदर्न पार्ट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली, इसके लिए यह जो महत्वपूर्ण संवेदीकरण सह समीक्षा कार्यशाला जो सेंसिटाइजेशन रिव्यू वर्कशॉप जो आज आयोजित है, 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं और मुझे यहाँ आकर के अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। अभी तमिलनाडु के मंत्री जी ने जो तमिलनाडु के बारे में बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया, मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि यहाँ पूरे राज्य में जो कुछ शहर हैं या कुछ इस प्रकार के उद्योग धंधे हैं, उनसे निपटने के लिए अनेक प्रकार के कारगर कदम
तमिलनाडु सरकार ने उठाई है। अन्य राज्यों ने भी इस प्रकार के कदम उठाए होंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। आप जानते हैं कि कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य जो है वायु गुणवत्ता जो हमारी है उसके प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, उनको संवेदनशील बनाना और उसके साथ साथ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जानकारी और उत्तम पद्धतियों का आदान प्रदान। कोई राज्य अच्छा कर रहा है तो उनको सीखने की भी आवश्यकता है, उनको समझने की भी आवश्यकता है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2019 से देश में मानकों का उसको पूरा करने वाले 132 शहरों एनएसी में वायु प्रदूषण के स्तरों को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम हमने एनसीएपी को कार्यान्वित करने का काम किया है। इन शहरों में से 124 जो सिटीज हैं जिसमें लगातार 5 वर्षों तक राष्ट्रव्यापी परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों NAQS का अनुपालन न करने के आधार पर एनसीएपी के तहत जो अभिज्ञात किया गया है उसमें से 124 120 सिटीज में से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य निष्पादन आधारित अनुदान प्राप्त करने, उसके लिए 15वें वित्त आयोग जो 15th हमारा फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा ऐसे अभिज्ञात 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरों को हमने एमपीसी शहरी क्षेत्र के रूप में शामिल किया है और एनसीएपी के तहत केंद्र और राज्य सरकार राज्य स्तर की जो हमारी संचालन टीम है उसकी निगरानी और कार्यान्वयन समितियां जो गठित करके हमने एनसीएपी के तहत कार्यकलापों के क्रियान्वयन की प्रगति की आवधिक समीक्षा नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सभी हितधारकों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको संवेदनशील बनाने, उनकी जानकारी को साझा करने और उनके क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। ऐसी एक कार्यशाला हमारे यशस्वी मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में पश्चिम क्षेत्र के लिए जो आयोजित की गई थी तथा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा राज्यों के वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु एनसीएपी और 15वें वित्त आयोग के अनुदान के बारे में वहां अवगत कराया गया था। उसी कड़ी में यह दक्षिणी क्षेत्र का साउदर्न पार्ट के जो राज्य हैं उनका आज 2 दिवसीय सम्मेलन वर्कशॉप कार्यशाला यहाँ आयोजित है और मुझे लग रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनसीएपी के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक पोर्टल जो प्राण पोर्टल के रूप में उसको भी शुरू किया है और इस पोर्टल में शहरों का, राज्यों का और संबद्ध मंत्रालयों की जो कार्य योजनाएं हैं उसको साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों को प्रदर्शित किया जाएगा और उसके कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी भी की जाएगी। देश में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जहां प्रभावी कार्रवाइयां करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों सहित सभी स्टेक होल्डर्स के साथ साथ जनता की भागीदारी, जो हम आम लोगों की भागीदारी कैसे हो, पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक जागरण, लोक सहभागिता, लोक सेवा, तभी लोक कल्याण। तो हम लोक कल्याण के लिए ये सारे कार्यक्रम शहरों में कर रहे हैं। आपको मालूम है कि भारत सरकार ने 1000 शहरों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
और हमने नगर वन लगाने की भी योजना प्रारंभ किया है। और यह एक बड़ी कदम है जिससे जहां हम कार्बन के उत्सर्जन को कम करेंगे, वहीं एयर पॉल्यूशन को भी हम उसको भी नियंत्रित करने में समर्थ हो पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये 2 दिवसीय कार्यशाला जो अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हो रहा है, और उसमें वायु गुणवत्ता के बारे में हम जागरूकता फैलाने की दिशा में एक सफल कार्यक्रम सिद्ध करेंगे होगी। और स्वच्छ पवन, नील गगन, इस सपने को हम साकार करेंगे। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। धन्यवाद sir. Now I invite Shri Bhupendra Yadav sir, Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change, Labour and Employment, Government of India, for his inaugural address. On the occasion of Sensitization Cum Review Workshop of National Clean Air Program, on the dais, Shri Ashwani Kumar Choube ji, Honorable Minister of State, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Honorable Shiva V. Metyan ji, Honorable Minister of Environment, Government of Tamil Nadu, Srimati Leena Nandan ji, Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Shri Naresh Pal Gangwar ji, Additional Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Srimati Supriya Sahu ji, Additional Chief Secretary, Department of Environment, Climate Change and Forest, Government of Tamil Nadu, ladies and gentlemen who are present here, and who also those who are joined us virtually, good morning to all of you. Before I start, I must thanks to our Honorable Minister that as a gift, he gave me a book, Tirukural. I got the translated copy earlier also, because I know that Tirukural as a book that deals with the art of living. And we know that it transcends national boundaries, historical, social limitations and language barriers. When I opened this book, I found a good line, and it is very relevant for this workshop. Here it's mentioned, actually we are organizing this workshop for clean air. We can't achieve the object of clean air. So 2 sentences I want to read. First, for all of us, it is always easy to preach something, but hard to practice the same thing. So whatever we will discuss in next 2 days, only the word, but our examination beyond 2 days, when we actually dealt what we discuss here. But we can achieve. How we can achieve, it is written here also. Whatever people desire, they get as desired if only they have firmness of mind. So if question is raised in this book, object is highlighting in this book, definitely answer is also here. So I hope that all participants who participated in this meeting
what they discuss, what they think, and what the conclusion they will arrive, they will work with the firmness. And definitely we will achieve the object of clean air in our country. I am here to attend next 2 days the 4 major program. First is the workshop of National Clean Air Mission program. Second, related with the biodiversity. And our National Biodiversity Board in Chennai. So we will organize the workshop for that also. Third one is related with the wetland. There are good wetlands in Tamil Nadu also. We are in the Amrit Mahotsav year of this country, where we completed the 75th year of our independence, and we feel that we are in the Amrit Kal of this country. We are having a good wetlands, and for preserving and conservation of that land, we are organizing a national level workshop for protection of our wetlands. And fourth, apart from Ministry of Environment, I am the Labour Minister also. So I will inaugurate the some foundation stone of ESIC hospital in Chennai also. But friends, today in this program, we gathered at the 3rd regional workshop that is being organized by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change to sensitize all the stakeholders involved in the air quality management program. As my colleague minister, Mr. Ashwani Chobe, already said that the first workshop of the series was organized in Mumbai, and a similar workshop was organized in Gurgaon for Delhi NCR region. These workshops are aimed to creating a momentum toward clean air action at the local level by discussing and sharing our knowledge, experiences, best practices about clean air. And I strongly feel that it is a continuous process of consultation with all stakeholders and collective action with help in bringing the holistic approach. Better air quality is the outcome of continuous process of action by all stakeholders, both the government at all levels as well as the citizens. Today's stakeholder consultation is part of a series of such consultation to help us strengthen our national planning with regard to clean air. The last 2 consultations in Mumbai and Gurgaon have helped us to understand the challenges and to devise effective ways to address them. I am happy to see the experts from academic institutions as well as students, mayors and NGOs are also participating in this workshop. Before I go into the specifics, let me first give my broader understanding of where we are and the way forward. Clean air involves understanding the sources which concentrate pollution in a particular topography and methodology, be it from energy, mobility, industry, agriculture, biomass burning, etc. The next step is putting in place a strategy and allocating resources to execute the solution. As example for Delhi NCR region, whether it was Tosop Badarpur power plant or phasing out Sonipat power plant, operationalizing the eastern and western peripheral expressway in a short span, thereby diverting non-destined traffic from Delhi or shifting industries to cleaner fuel, that is PNG, the union government moved quickly. Similarly, at the national level, the government under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, in 2016, notified 6 waste management rules covering solid waste, plastic waste, e-waste, biomedical waste, construction and demolition waste, and hazardous waste. In another revolutionary step,
India leap force to BS4 standard adoption to BS6 norms for fuel and vehicle is one of the landmark policy decisions toward combating air pollution. On 15th August 2020, the Honorable Prime Minister, displaying government's commitment to ensure clean air to all the people of the country, assuring them productive life, announced the intent and plan to improve the air quality in more than 100 cities through the holistic approach. Under National Clean Air Program, 132 non-attainment cities have been identified across the country based on the air quality data from 2014-18. The non-attainment cities list in this mixed cities of all size and types. In southern India, we have 13 cities, such 4 from Andhra Pradesh, each one from Tamil Nadu, Karnataka and Telangana. But it is a great pleasure to announce that 3 million plus cities of Tamil Nadu, Chennai, Madurai and Trichy are having its air quality within the national ambient of air quality standards. So congratulations to you. Friends, we must also understand the best practices emerging out of the academic discussion are not only defining element for clean air, it is the lifestyle which is of much more importance. Today, unfortunately, we are following a consumption-driven mindset, and I think it becomes equally important to be mindful of our consumption pattern. And from what I see, air pollution is not just science, but it has to be driven through better urban planning, lifestyle for environment. Friends, let me tell you that in my past experiences of 2 regional workshops, mobilization of all stakeholders has helped create a mass movement around improvement in air quality. The workshop at Mumbai for Western region was able to mobilize city administrators to take focus action in improving air quality. The experience sharing with NGO at Gurgaon helped me understand the challenges and identify the way forward for making the program a success. I have a firm belief that engagement of youth and informal sector would help build a required momentum in cities. I am sure that workshop to be held today would help sensitize mayors, NGOs, students and public at large regarding air quality and add the exchange ideas and best practices on fighting air pollution. I would also like to take this opportunity to congratulate Tamil Nadu Pollution Control Board, Chairman is here, for launching E-Commute program, wherein every Wednesday, all the officials of the board commute to office via non-fossil fuel driven vehicles. They may even walk or cycle to office. Further, school have also adopted E-Commute mode to commute to school. If replicated, this will have a significant impact in improving the air quality. Such behavioral changes have to be adopted by everyone and across all other aspects as well. I will especially appeal to my young friends to become active agitation, the mission to improve our quality. You, my friends, can do so by adopting sustainable lifestyle and appropriate behavior and attitude and become change agent of the society. Ladies and gentlemen, my travels and participation in global and local conferences, seminars, webinars, speaking and listening to some of the best minds on climate as the Environment Minister have made one thing clear to me. Words mean nothing if not backed by action, and individual action then will have
no impact unless supported to all. This is my written speech, but fortunately, this written speech supported by this original document also. Significant public involvement, that is Jan Bhagidari or participative governance, has been the biggest change in approach the country has witnessed since 2014 under Prime Minister Shri Narendra Modi ji. We all are witness and participate in the success of Swachh Bharat mission. It is a time to make clean air for all a participative mission. The air quality improvement have own positive aspects. But if we wish to achieve what we aspire, Jan Bhagidari, public participation, hold the key. With this, I will conclude wishing all the success to the workshop, and with a strong belief that with the coordination, collaboration, participation, and sustained effort of all stakeholders, objective of National Clean Air Program will be achieved. Let us all sincerely and earnestly contribute to that. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. As highlighted by our Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change, Labour and Employment, Government of India, and as mentioned by Shri Seva V. Mayanathan, sir, Honorable Minister for Environment, Climate Change, Youth Welfare and Sports Development, Government of Tamil Nadu, about a very important initiative of the Government of Tamil Nadu, that is E-Commute School. We are now going to felicitate the performing schools in this program. Before that, I'll just again reiterate that the objective of this E-Commute School program is to encourage high school students in Chennai city to adopt E-Commute mode to commute to school. This was initiated to encourage students to adopt green modes of transport like walk or use cycle or public transport to attain school. I would request Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav sir to felicitate and give E-Commute certificate to the performing schools. Sir, I invite first Chennai Higher Secondary School, Patel Nagar, Chennai, to come and get the E-Commute certificate. Come here. Everything comes close. Yes. Now I invite Chennai High School, Erukkan Cherry, Chennai, to get the E-Commute certificate. Now I invite Chennai Girls Higher Secondary School, Korukkupet, Chennai, to come on the stage and get the E-Commute certificate. Sir, these three schools were part of the category of government schools. Now I invite government-aided and private schools, category schools to come on the stage. First one is Kumara Raja Muthaiya Higher Secondary School, Adiyar, Chennai. Now I invite SKNS PMC Vivekananda Vidyalaya Junior, Mylapore, Chennai.
finally, in the category of government-aided private schools, I invite PS Higher Secondary School, Mylapore, Chennai, to come on a stage and get the commute certificate. Thank you very much, sir, and congratulations to all the schools who got the certificate. And now I invite Srimati Supriya Sahu, Additional Chief Secretary, Government of Tamil Nadu, Department of Environment, Forest and Climate Change, for her vote of thanks. Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav ji, Honorable Minister Shri Chaube ji, Honorable Minister Thiru Mayanathan ji, Minister, கற்பனைக்கு அது மெயில் அந்த தமிழை பேசிட்டு கொடுப்பாரு அதுக்காக வெயிட்டிங் அதனால சொல்கிறேன் இங்கே தானே வச்சுது அது ஏன் திரும்ப அங்கே அப்போ அங்கே போய்